Assalamu alaikum dear students. I am coming here with a topic and that topic is related to NLM, that is Newton's laws of motion. Dear students, I am going to discuss here second topic related to NLM. Okay, very nice. तो बेटा हमने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस किया था व्हाट इज ए फोर्स और फिर मैंने इसके यूनिट्स भी लिखे थे और फिर थोड़ा चर्चा की थी थोड़ी बहुत इनर्शिया के बारे में. नाउ आई एम टुडे going to continue here inertia and then after that I will discuss here Newton's laws of motion. Okay, very nice. So meantime we will discuss here dear students what is tension, what is normal and what is friction. थोड़ा इसके बारे में भी कुछ डिस्कशन होगी अगर टाइम मिला तो. ओके वेरी नाइस. लेट अस स्टार्ट हियर द कांसेप्ट इनर्शिया. ओके वेरी नाइस. तो देखो बेटा क्या मैंने क्या लिखा था इन माय प्रीवियस टॉपिक इनर्शिया. मैंने थोड़ा डिस्कस की इसके बारे में, मैंने थोड़ा डिस्कशन की थी. तो बेटा एक बार फिर थोड़ा बताएंगे कि इनर्शिया क्या है. इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी डज नॉट वांट अस टू चेंज इट्स स्टेट और बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस to have any change in its state, or it is the inability of a body to change its state, whatever state it is. If it is at the state of rest, then it will not change its state by itself. And if anybody wants to change its state of rest, then if anybody wants to change the state of a body, then the body will register. It will oppose to have change there in its state of rest. Okay, very nice. तो बेटा मैंने लिखा था कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ये लिखा था मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी, इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस any change in its state. Okay, if body is at rest, it wants to be at rest and it does not want us to change its state of rest. And if body is in uniform motion, it wants to be in uniform motion and it does not want to change its state of uniform motion into state of non-uniform motion, or it does not want, on its own by itself, it does not want its change of uniform motion into rest. तो बेटा मैंने क्या कहा कि यहाँ थ्री स्टेटस, मैकेनिकल स्टेटस है यहाँ, बेटा रेस्ट स्टेट और बेटा यूनिफॉर्म मोशन स्टेट और नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टेट, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. लेकिन आज थोड़े इनर्शिया के बारे में बताएंगे. तो इनर्शिया मैंने लिखा इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट. ओके, देयर आर थ्री टाइप्स. मैंने कहा था कि डिस्कस करेंगे ये थ्री टाइप्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. देयर आर बेटा कितनी टाइप्स? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. ओके वेरी नाइस. पहला क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और दूसरा बेटा जो यहां डिस्कस करेंगे दैट इज इनर्शिया इन मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन लिखेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन. और बेटा तीसरी बात जो डिस्कस करने वाले हैं यहां तो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. See dear students, I will discuss these one by one. That is my today's topic. In my today's topic, dear students, बेटा आज हम इसमें यहाँ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके वेरी नाइस. और इसकी भी डिस्कस करूंगा इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. आई विल डिस्कस दिस बाय गिविंग सम एग्जांपल्स हियर. ओके वेरी नाइस. दिस वेरी इजी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. सी डियर, but you should keep in mind that more the mass, more is the translational inertia. Less the mass, less is the translational inertia. मैंने बेटा आपको ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी दे दी है in my previous topic. Okay, very nice. तो let us start here. What is inertia of rest? लिखो बेटा, लिखते जाएगा inertia of rest क्या होता है. See here, मैं यहाँ लिखूंगा inertia of rest. Okay, very nice. बेटा यहाँ लिखेंगे first type here is inertia of rest. क्या होता है inertia of rest? Inertia of rest, it is the inability of body. It is the inability of a body. It is the inability of a body to change its state of rest by itself. To change its state of rest by itself. State of rest by itself. By itself. बेटे मैंने आपको कहा था कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है. व्हेन किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है तो दैट स्टेट इज नोन एज रेस्ट स्टेट और स्टेट ऑफ रेस्ट. किसको बेटा स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं बेटा? ओके वेरी नाइस. किसको स्टेट ऑफ रेस्ट? व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो.
फॉर ए स्टेशनरी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी क्या होती है बेटा? जीरो. ओके, वेरी नाइस. When velocity of a body is zero, then we can say it is at a state of rest. Okay, very nice. देखो बेटा. Now see here. मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ? What is my here concept? My concept is inertia of rest. अगर बेटा कोई बॉडी है रेस्ट में, अगर कोई बॉडी है रेस्ट में, देखो बेटा ये ग्राउंड है, अगर कोई बॉडी या रेस्ट में है, ओके वेरी सीरियस. अगर मैंने कोई बॉडी यहाँ बेटा रेस्ट में ले ली, रेस्ट का मतलब है कि इट इज v इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा इट डज नॉट दिस मैस जो ग्राउंड पर है यहाँ बेटा, ओके वेरी नाइस, दिस मैस विल नॉट, दिस ऑब्जेक्ट, दिस बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट. ये इस वक्त बेटा किस स्टेट में है? ये रेस्ट में है. क्यों? बिकॉज वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट में है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो बेटे देखो कि ये खुद मोशन में नहीं आएगी, ये खुद मोशन में नहीं आएगी. क्यों? बिकॉज इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इट हैजंट एबिलिटी, इट इज इनेबिलिटी. इसकी एबिलिटी है ही नहीं कि वो खुद मोशन में आ सके, कि वो रेस्ट से किस में आ जाएगी? रेस्ट से किस में आ जाएगी? मोशन. हाँ. और अगर हम इसको बेटा चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे रेस्ट स्टेट में किस में लाने की? मोशन स्टेट में. सपोज हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा, देखो क्या है, मैंने यहाँ बॉडी ले ली और इस बॉडी का मास मैंने बेटा m ले लिया. नाउ इफ वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बॉडी, तो देखो बेटा इट मे चेंज, although it is here at rest that is v is zero, रेस्ट स्टेट में it will come into motion but it will resist to change its state, क्योंकि इसका इस वक्त नेचुरल स्टेट है रेस्ट, और वो अपोज करेगी कि अपना स्टेट चेंज करने की. किसको अपोज करेगी? फोर्स को. ये नहीं चाहेगी कि मैं किस में आ जाऊं? मोशन में. एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज नोन एज inertia of rest. That is, it cannot change its state of rest into state of motion by its own. It has inability, it hasn't the capability to do so. बेटा इसको ये ताकत ही नहीं है कि वो खुद अपने रेस्ट स्टेट को किस में लाए? मोशन स्टेट में. या बेटा अगर इसको कोई चीज फोर्स तो वो चीज हो गया जो किसी चीज का स्टेट चेंज करे, मोशन स्टेट को रेस्ट में चेंज करे, रेस्ट को स्टेट में, रेस्ट को मोशन में चेंज करे, या यूनिफॉर्म मोशन को नॉन यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म मोशन में या रेस्ट स्टेट में. लेकिन अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कोशिश करेगी कि अपना स्टेट ये अपोज करेगी इस फोर्स को, जो इसको अपना नेचुरल स्टेट चेंज करने की कोशिश करेगा. बिकॉज इट विल अपोज द एजेंसी, इट विल अपोज द फोर्स दैट विल कॉज चेंज इन इट्स स्टेट. एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ दिस बॉडी इज नोन एज inertia of rest. Okay, I will give now some examples so as to have clarity about the inertia of rest. देखो बेटे क्या, see here, no examples here. For example, पहले एग्जाम्पल है बेटा, सी डियर, अगर हम if we shake a mango tree branch of if we shake a mango branch, a branch which is containing some mangoes, अगर हम इस ब्रांच को हिला देंगे ऐसे, तो देखो बेटा कि first of all these mangoes which are heavy, more the mass, more the inertia, they are at rest. First of all, when they are there in the branch, they are at rest, but we want to disturb them, we want to change their state of rest, but they do not want to change their rest. How we guess that they do not want to change their state of rest? Because once we try to shake the branch of the tree, जब हम जुई बेटा हम when we try to shake the branch of the tree, these mangoes, instead of going into the state of motion, they get detached from the branches and fell down towards the earth. And that is due to the inertia of rest. Because these mangoes do not want to change their state of rest. Instead of going to the motion, instead of going along the branch of the tree, they get cut, they get detached. Because they have mass, they have inertia of rest. They want to be at rest. They oppose the change. That is my change that I want to change here and there. They oppose instead of moving here and there, they fell down. And that is due to inertia of rest. Okay. Suppose when we shake a mango branch tree, mango branch, when we shake a mango branch of a mango tree, then the mangoes get detached, then the mangoes fell down and get cut from the branches.
due to inertia of rest. Due to beta kisi inertia of rest, because they want to be at rest. They don't want to move with the motion of the along the motion of the branch, because they don't want to change their rest, and that is why they have their capability to be at rest, and they get detached and get fell down from their own positions while the branches go here and there, and they get detached, and that is due to inertia of rest. Okay, very nice. When we shake a mango branch of a tree, then the mangoes fell down and get cut from the branches of a tree branches due to inertia of rest, because they want to be at rest. Okay, very nice. And oppose any change. तो ये चेंज क्या थी, शेक, तो शेक के साथ नहीं गई, हमने डिटैच हो गई वो. ओके, वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है इसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ बेटा, देखो क्या है. When passengers, वेरी इजी, ये तो इजी है, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, लेकिन क्या तो यहाँ करना है, पढ़ना है, थोड़ा बेसिक्स तो देना है, और इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे सीधे. यहाँ बेटा यहाँ सिर्फ डिस्कस करने हैं न्यूमेरिकल डियर इन एनएलएम. जबरदस्त न्यूमेरिकल है, आगे बहुत मजा आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये तो थ्योरेटिकल है, इंट्रोडक्शन है बेटा, तो ये भी थोड़ा पता होनी चाहिए, क्योंकि देन वी विल गो टुवर्ड्स दैट. आफ्टर फिनिशिंग दिस लिटिल बिट ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हियर, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स. ओके, वेरी नाइस. तो सुन लो बेटा. The second point here is, dear students, when passengers are sitting there in a vehicle, there in a bus or any sumo, when the bus is at rest, तो ये जो है वो passengers हैं, they are also at rest, but once suddenly the bus starts, the sumo or bus starts moving, the passengers get fell down backwards. They get jerked backwards. They get pushed backwards. देखो बेटा, this is again due to inertia of rest. क्या लिखेंगे? When passengers, when a bus ऐसे लिखेंगे. When a bus or any vehicle, when a bus starts suddenly from rest, starts motion suddenly from, when a bus starts suddenly from rest, the passengers in the bus, dear students, get pushed backwards. Why? What is the reason, dear students? The reason is that it is all due to inertia of rest. It is due to inertia of rest. It is due to inertia of rest. Because देखो बेटे क्या है, once अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ गाड़ी में बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स यहाँ है. ओके, वेरी नाइस. अगर यहाँ पैसेंजर्स है, when it is at rest, that is velocity is 0. But once it starts moving, once the bus starts moving बेटा, जैसे ही ये suddenly move करती है, these passengers get fell down, get pushed backwards. What is the reason? Reason is that they want to be at rest, but here this bottom part gets pushed by along the bus, but top part still wants to be at, top part of the body still wants to be at rest, and it is in fact due to inertia of rest. Again, an example here, I will quote here an example. When a horse rider, here is again बेटे एक और example दूंगा, तीसरी example. अगर horse rider है horse पर, when a horse rider is on a horse and this horse is at rest initially, because it is at state of rest, but once it suddenly moves, the rider gets pushed backwards. It falls backwards. It is again due to inertia, because the top part of the body wants to be at rest, but the bottom part has moved. It has moved along the horse. Once horse moves forwards. Okay, very nice. यहाँ इसे लिखेंगे a horse rider. ऐसे लिखेंगे बेटा. A horse rider gets pushed backwards. When the horse suddenly moves from the rest, moves from the state of rest.
Okay, very nice. It is again better due to inertia of rest. और भी बहुत एग्जांपल्स हैं बेटे यहाँ, और भी बहुत है. सपोज ए कॉइन, व्हेन कॉइन इज देयर ऑन ए कार्डबोर्ड, और हम कार्डबोर्ड को खींचते हैं तो ये कॉइन जो है, इट इज ड्यू टू हैवी मास ऑफ द कॉइन, इट falls from it falls from its mean position and goes downwards in the bucket or anything. Whether देखो बेटा क्या है, ऐसे अगर हम ऐसी कोई ये यहाँ बीकर है यहाँ, ओके वेरी नाइस, यहाँ इस पर एक ऐसी बेटा है, here is a cardboard, और यहाँ बेटा यहाँ कुछ पैसा है, मान लीजिए कि यहाँ कोई यहाँ ऐसी है हैवी मैस कॉइन, तो वाइस जैसे ही हम खींचेंगे इसको तो ये मैस इधर जो है ना कॉइन नीचे आता है. Why? What is the reason? Reason is that it wants to be at rest, but once we pull it, it don't goes along our pull. It don't set us into motion, but it sets us into motion in a vertical direction due to its heavy mass, due to its inertia, and goes into the bucket. Okay, downwards. Very nice. तो ये भी क्या है, again it is due to inertia of rest. It is again due to inertia of rest. और कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ बेटा, बाकी कुछ पढ़ेंगे, बहुत सी examples हैं. Okay, there are number of examples with the help which you can give here so as to have clear concept related to inertia of rest. Okay, very nice. Okay, लेकिन आइए अब दूसरा concept है यहाँ. तो दूसरा क्या है बेटा यहाँ, inertia of direction. क्या है बेटा, inertia of direction. क्या है inertia of direction बेटा, लिख लो. It is the inability of a body to change. It is the बेटा क्या है, it is the inability of a body to change its state of uniform motion by itself. क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ, क्या है, what is inertia, नहीं inertia of direction नहीं है, inertia of motion लिखना है, फिर direction लिखेंगे, sorry, यहाँ inertia of motion है बेटा. Inertia of motion क्या होता है, what is inertia of motion? Inertia of motion, it is the inability of a body to change its state of uniform motion by itself. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, दैट इज इट हैज वेलोसिटी बट v इज कांस्टेंट. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन स्टेट, ये स्टेट क्या होता है बेटा, ऐसे अगर कोई बॉडी का मास m है एंड दैट इज मूविंग विद v इज इक्वल टू कांस्टेंट and such that its acceleration is 0, then at that time this is known as uniform motion state. बेटा इस स्टेट को क्या कहते हैं, when what is first of all one must know what is a uniform motion state. Uniform motion state किसको कहते हैं, when v remains constant, जब v constant हो और acceleration क्या हो गाड़ी की 0 in a straight line, then at that time we can say that mass is in a uniform motion state. अब यहाँ है inertia of motion क्या है बेटा, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में हो इन स्ट्रेट लाइन, it does not want to change its state by itself. It hasn't the ability to change its state of uniform motion into non-uniform motion, or to change its uniform motion state into rest state. Okay, और अगर ये it hasn't the ability, it is the inability of a body to change its state of uniform motion by itself. ये खुद नहीं कर सकती, इसमें इतनी ताकत नहीं है. और we can say if any external agency wants, now force is the external agency that can change the state. आगे पढ़ेंगे कैसी, यही पढ़ना है. तो देखो बेटे क्या, अगर ये ग्राउंड पर है, बॉडीज के मैस है, if now it is in what state, v is equal to constant, that is uniform, and a क्या है इसका, a है 0 इसका बेटा, देखो बेटे in a straight line. अगर हम फोर्स करेंगे अप्लाई, and that force will try to bring this body opposite में लगाएंगे. अगर ये वेलोसिटी यहाँ है ऐसी चल रही है तो फोर्स यहाँ लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगाएंगे एफ एक्सटर्नल, और इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे टू ब्रिंग इनटू द स्टेट ऑफ रेस्ट. देखो बेटा ये नहीं मानेगी, ये मानेगी तो जरूर तो ये तो आएगी रेस्ट में, बट इट विल अपोज which will cause the change in its natural state. It will oppose it. It has ability to oppose it, and that ability to oppose it so that oppose the agency that will cause its change in the natural state. Here its natural state is there in the uniform motion. तो ये oppose करेगी जो भी कोई इसको change करने की, इसके state को, uniform motion को.
uniform motion के state को, and that property of this body at that time is known as inertia of motion. Okay, very nice. ठीक है ना. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा, ये आएगा रेस्ट में तो आएगा, लेकिन कोशिश ही करेगा कि यूनिफॉर्म मोशन में ही चले. इट विल अपोज द फोर्स. Why it will oppose? Because it will not easily come to rest, we can see. Okay, I will give some examples so as that to have clarity about this. Okay, very nice. देखो बेटे क्या, see here. Okay, very nice. देखो बेटे क्या है, यहाँ कुछ examples that will illustrate here inertia of motion. तो बेटे पहली एग्जांपल यहाँ देखो बेटे क्या है, जस्ट अपोजिट टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सी डियर. ओके, वेरी नाइस. अगर बेटे यहाँ सी डियर, इट इज जस्ट अपोजिट टू दिस इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सपोज नाउ इफ ए हॉर्स राइडर की बात करेंगे बेटा, वही इस रिवर्स है यहाँ. If a horse rider is moving with a uniform motion or a bus is moving with a uniform motion in a straight line, and there are passengers there in the bus, also in horse rider is there on the horse. Okay, very nice. देखो बेटा पहले लेंगे यहाँ, if a horse rider, अगर एक horse rider किस पर है बेटा, he is on the back of a horse and is in a uniform motion. Once the horse stops motion, then suddenly a forward push. There is a forward push to the passenger. He falls forwards. He falls forwards. He will fall forward. Okay, very nice. And that is due to inertia of motion. Because upper part of the body wants to be in motion, but lower part of the body has come into the rest. But the body here is in a uniform motion. The horse is in a uniform motion. The passenger, the body wants to be in a uniform motion. Once it stops, suddenly the horse rider gets pushed forwards, or he will fall, or he will fall forward. Okay, very nice. तो क्या है, when a बेटा ऐसे लिखो, when a horse rider stops a horse suddenly, then he will fall forwards. He will fall forward. किसमें बेटा ये, then he will fall forward. Okay, that is due to ये किसकी वजह से होता है, that is due to inertia of motion. That is due to inertia of motion. Okay, very nice. Reverse of inertia of rest. Okay, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है आपको, तो आपको ये समझ में आया. Similarly, when passengers are there in a bus which is moving with a uniform motion in straight line, and once the driver stops suddenly when he give brake to the bus, then the passengers get pushed forwards, and that is again due to inertia of motion, because the lower part of the body wants to be at rest, but the upper part of the body is still in uniform motion. Still it wants to be in uniform motion, and once it starts, the lower part starts, but upper part is still in inertia of motion due to inertia of motion. Okay, very nice. It is in motion due to inertia of motion. Okay, very nice. तो लिखेंगे यहाँ बेटा, लिख लो, क्या लिख लो, when a passenger, when a driver of a bus gives brake, the passengers in the bus get pushed forwards. Why? The reason is it is due to inertia of inertia of motion. Because they want to be in motion. That is why they get pushed forwards. Okay, very nice. Okay. And again बेटा ये आपको समझ में आया. और भी कई एग्जांपल्स है. एक अच्छी सी एग्जांपल यहाँ एक है. देखो बेटे क्या है, तीसरी एग्जांपल, see here, when an athlete runs. Okay, let us take the example of Syed Sir. Then Syed Sir is moving very fast. Why he is moving very fast? Because once he moves fast, due to inertia, the velocity that he gains during running, that velocity gets added to the velocity with which he throws the ball.
and that velocity gets added with the velocity of the ball that is thrown by Shoaib Akhtar, and result is that the ball has got a tremendous speed. Okay, very nice. And it is again due to inertia of motion. आई बात समझ में क्या मैंने कहा कि when Shoaib Akhtar, why Shoaib Akhtar is running fast and coming from a large distance. Shoaib Akhtar is running fast. Why? Because the velocity he gains. Because the velocity he gains during running. Because the velocity he gains during running. He gains during running. During running gets added. किसके साथ add होती है? Gets added to the velocity. Gets added to the velocity. Gets added to the velocity of the ball with which he throws. With which he throws. Thus, there is a tremendous speed in the ball. Thus, there is a tremendous speed. Tremendous speed in the ball. Why? In the ball due to inertia of motion. Due to inertia. Inertia लगता है इसको, inertia of motion लगता है, इसी की वजह से ये जबरदस्त बॉल आ रही है, तेज आ रही है और बैट्समैनों के धज्जियां उड़ाती है ना, विकेट उखाड़ देती है. Okay, very nice. All beta that is sufficient here so as to get clarity here in the inertia of motion. Now I will here proceed towards the inertia of direction. Okay, very nice. Okay. See here, I hope that you have got this. Now beta यहाँ है inertia of direction. Okay. Third. Inertia of direction क्या है बेटा? Inertia of direction is nothing. It is the inability of a same. क्या लिखेंगे बेटा? It is the inability of a body. It is the inability of a body to change. It is the inability of a body. It is the inability of a body to change its state of direction. To change its state of direction. अरे ये भी एक state है direction का. To change its state of direction by itself. ओके बेटा, एक और स्टेट है, देखो क्या है बेटा. स्टेट ऑफ रेस्ट भी है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी है, स्टेट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी है, लेकिन डायरेक्शन का मसला है. A body does not want us to change its direction. This is another state, fourth state here. बेटा there are not only 3 states but there are 4 states here. मैकेनिक्स के हिसाब से अब चौथा जहाँ स्टेट भी हमको दिखने लग रहा है. ओके, वेरी नाइस. Already here are 3 cases. There is inertia of rest, inertia of uniform motion, inertia of non-uniform motion. तो बेटा यहाँ state of rest, state of uniform motion, state of non-uniform motion and state of direction भी है ना यहाँ. Okay, एक और यहाँ state है. See here. Okay, very nice. It is the inability of a body to change its state of direction by itself. अगर बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसको खुद ताकत नहीं है, इसकी एबिलिटी और इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये खुद अपनी डायरेक्शन चेंज करे, तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, फोर्स है जो इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा. ओके, वेरी नाइस. तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन when it wants to move in a straight line and doesn't want it wants to be in its natural state and opposes any external force that wants to change its natural state. And that property of a body in motion in a particular direction is known as inertia of direction. Okay, very nice. तो बेटा यहाँ कोई examples देंगे. देखो बेटे sit here. When we देखो बेटे क्या है, ऐसे करते हैं जैसे कि अगर हम एक रस्सी लाएंगे और रस्सी के एक एंड को स्टोन से टाई करेंगे और दूसरा एंड जो है ना वो अपने हाथ से बांधेंगे, ठीक है ना, तो फिर इस घुमाएंगे, इस रस्सी को, इस स्टोन को घुमाएंगे, ठीक है ना, which is connected to the string and another end of the string is we have held the other end of the string and then we gives ऐसे bind कर रहे हैं, ऐसे घुमाते हैं. Once it moves in a circle, but if string gets cut, if string gets cut, it will move in a tangential direction. Why? Because it has a natural tendency to move at any point. Its natural direction is there along the tangent, and once the string gets cut, it will move along the tangent, along the direction of tangent. Why? It is again dear students,
inertia of direction. ओके आई बात समझ में क्या बेटा मैंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे, देखो बेटा ये है ऐसी ऐसी बेटा, देखो ऐसी सपोज ये ऐसी है, ये बेटा मैंने ले लिया, यहाँ हैंड है हमारा हाथ और ये रस्सी है और यहाँ स्टोन है, ये स्टोन है, स्टोन है mass sum, और ये हमारा हैंड है और ये स्ट्रिंग है बेटा, ये स्ट्रिंग। अगर हम इसको घुमाएंगे ऐसे, सपोज यहाँ यहाँ ये रस्सी है, ये रस्सी है, अगर ये रस्सी यहाँ कट गई, यहाँ कट गई ये रस्सी, तो ये ऐसे जाएगी ऐसी, क्यों जाएगी ऐसी? Because at this point the direction of the natural direction of the body of the stone is along the tangent. So once it gets, it will move along this direction, because it don't want us to change this direction. It is that it is here in fact the centripetal force that changes its direction. So it doesn't want to change its direction. Why? Because inertia of direction. It wants to. It is natural tendency is to move along the tangent. But so once this gets cut, it moves along the tangent. It is due to inertia of direction. So कौन सी चीज यहाँ इसके स्टेट को चेंज करे, इसकी डायरेक्शन को कौन चीज यहाँ ये होता है सेंट्रिपेटल फोर्स, वही चेंज करता है इसकी स्टेट को, इसको किसमें, and that moves that is then that this force is then compels this body to move in the circle. Okay, very nice. Here centripetal force is external force and that changes the state. Okay, एक कुछ और बात भी और भी है ना, ये एक एग्जांपल है। ओके तो दूसरी एग्जांपल क्या है बेटा, यहाँ दूसरी एग्जांपल, तो सेकंड एग्जांपल हियर इज लाइक दिस डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि अगर कोई गाड़ी है ना, गाड़ी में पैसेंजर्स है, हम हैं, आप हैं, सभी होते हैं गाड़ी में। अगर कोई जो ही गाड़ी किसी कर्व पर, किसी टर्निंग ट्रैक पर कर्व करती है, एंड वी आर पुश्ड outwards. We are pushed outwards there. What is the reason? Reason is that the natural tendency, the natural direction there is along the straight line. But once it gets curved, there is the need of centripetal force. So the centripetal force pushes us. There is I can't say that centripetal force pushes here. Actually, there is the natural tendency is that it wants to move along the direction of motion. Okay, very nice. तो बेटा आपको बात आई समझ में? Okay, very nice. तो देखो क्या है, मैंने क्या कहा कि वहां ये नेचुरल टेंडेंसी है कि जो ही ऐसी, ये देखो बेटे क्या है, अगर गाड़ी ऐसी है कि गाड़ी है बेटा, यहाँ देखो क्या है, यहाँ गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है बेटा ऐसी गाड़ी जा, तो ये जब एक कर्व रोड पे है, तो ये बेटा क्या है, जो पैसेंजर्स तो वो यहाँ इनकी टेंडेंसी होती है कि जो ही ये यहाँ कर्व होती है, यहाँ बेटा कर्व होती है, तो हम वी गेट पुश्ड बेटा आउटवर्ड हियर। ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है? व्हाट इज दिस? इट इज अगेन ड्यू टू बेटा इनर्शिया ऑफ, इट इज हियर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, और भी एग्जांपल्स है बेटा, बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो मड गार्ड्स है ना, जैसे मड गार्ड्स की जैसी कोई मड जो है ना व्हीकल, अगर कोई किसी जगह तो व्हीकल ऐसे मूव करता है, तो जो है ना मड तो टेंजेंशियली जा रही है, इट इज ड्यू टू अगेन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, देयर इज एन एग्जांपल, वंस वी प्रेस है, जैसे नाइफ वी प्रेस, वंस नाइफ इज प्रेस्ड ऑन स्टोन, है ना, प्रेस करते हैं स्टोन पर, एंड दैट देयर आर these sparks go tangentially. And that's again due to inertia of direction, because their natural tendency is to go along the direction tangent, but it is the external centripetal force that changes their direction. Okay, very nice. And that is again due to inertia of direction. Now dear students, I will here now discuss what is Newton's first law of motion. Okay, very nice. देखो बेटे क्या, तो बेटे यहाँ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा, तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं, लॉज ऑफ मोशन। ओके, वेरी नाइस। तो पहला लॉ क्या है बेटा? द फर्स्ट लॉ हियर इज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन साहब का पहला लॉ क्या है? व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ओके, वेरी नाइस। देखो बेटे क्या है, ये ऐसी है कि देखो बेटे क्या है, here Newton's first law, I will first of all define here, I will give the definition of Newton's first law of motion. Then dear students, after that I will define here force in terms of Newton's first law of motion, and I will define here inertia in terms of Newton's first law of motion, and her equilibrium is there, which is also mechanical equilibrium is also defined by Newton's first law of motion. So there are three important things that we observe there that we derive rather from Newton's first law of motion. क्या हम यहाँ बेटे डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
Newton's first law of motion gives the definition of inertia, and Newton's first law gives also the concept of mechanical equilibrium. Okay, very nice. देखो बेटा, तो पहले define करेंगे. Let us here first of all try to define here Newton's first law of motion. What is Newton's first law of motion? Okay, dear. According to this law, बेटा आपको पता है कि a body continues in its state of rest or state of uniform motion unless some external force is applied on the body. Everybody knows this बेटा. क्या है देखो. A body continues in its state of rest or state of uniform motion unless some external force is applied on the body. क्या बेटे लिखा मैंने. व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर न्यूटन साहब का पहला लॉ क्या है रिलेटेड टू मोशन. ए बॉडी कंटिन्यूस, एक बॉडी हमेशा कंटिन्यू चालू रहेगी, कंटिन्यू एक ही जगह रहेगी इन स्टेट ऑफ रेस्ट या रेस्ट स्टेट में रहेगी, या अगर किस स्टेट में हो यूनिफॉर्म मोशन में ये हमेशा इसी स्टेट में रहेगी तब तक जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे. देखा ठीक है ना. इजी, बहुत इजी, सबको पता है. इजी है ना, बहुत इजी. इसका मतलब ये है कि देखो बेटा क्या है. इफ ए बॉडी इज एट, अगर कोई बॉडी है यहाँ जिसका मास बेटा m है, इफ दिस बॉडी इज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट में है दैट मींस इट्स वेलोसिटी हियर इज 0. अगर ये रेस्ट में है इट विल कंटिन्यू फॉर एवर टू रिमेन एट रेस्ट. इट विल कंटिन्यू फॉर इयर्स टू फॉर एवर इट विल बी एट रेस्ट. कब तक? जब तक कि इसके साथ कोई छेड़खानी ना करे. छेड़खानी का मतलब कि अगर कोई इस पर एफ एक्सटर्नल अप्लाई ना करे तो एवरीबॉडी जब व्हेन a book lying on a table it will also remain there unless some force is applied. A ball will remain at rest, a stone will remain at rest unless some external force is applied on it. Okay, तो ये रेस्ट पार्ट है. It has two parts. Now there is little bit about uniform motion. Uniform ये क्या है body. This is the part here. This is the thing that I have to discuss here. Uniform motion. A body will now, the second part of this is a body will remain in a uniform motion in a straight line unless some board. ये स्टेटमेंट क्या है? ये जबरदस्त स्टेटमेंट है. पहले ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल ने कोशिश की थी लेकिन एरिस्टोटल नाकामयाब रहा, जिसको कहते हैं एरिस्टोटल फैलेसी. एरिस्टोटल को बहुत धचका लगा इसकी थ्योरी को, इसके कॉन्सेप्ट, इसके स्टेटमेंट को, इसकी फिलॉसफी को जबरदस्त धचका लगा. इसके स्टेटमेंट को जबरदस्त धचका दे दिया गैलीलियो साहब ने. फिर गैलीलियो साहब का आगे बढ़ाया न्यूटन साहब ने. ओके, वेरी नाइस. देखो क्या है यहाँ क्या है बेटा. कंटिन्यूअस ए बॉडी रिमेन्स. ऐसे दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या है. यहाँ ग्राउंड है. ए बॉडी विल रिमेन. मान लीजिए ये बॉल है. इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज v रिमेन्स कांस्टेंट. ऐसे जाएगी और एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी 0. ए बॉडी विल move with a uniform velocity continuously in a straight line unless some external force is applied on it. ये बेटा लग रहा है कि something is wrong here. हाँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो बेटा क्या है. Usually what we observe there in our daily lives, we observe there students, once we throw a ball with some uniform velocity, once a ball is moving with a uniform velocity, but after a certain time, although it will travel a long distance, but it will finally come to rest. What is the reason why it comes to rest? अरे क्या है, एरिस्टोटल ने क्या कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था कि इस बॉल को, अगर बॉल को कंटिन्यू करना है तो इसको कंटिन्यूअसली फोर्स से अप्लाई करना है. बिल्कुल इसके मुखालिफ कहा था उसने, लेकिन उसको धचका लग गया बिकॉज ही वाज नॉट नोइंग अबाउट द frictional force. Neither he was knowing about the frictional force that arises due to the when ball is moving along the ground. Also he was not knowing about the air resistance force that comes into play. ओके, देखो बेटे क्या एक्चुअली ये क्यों स्टॉप हो रही है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट लॉ, इट शुड कंटिन्यू, बट ये स्टॉप हो रही है. क्या हो रहा है यहाँ? क्योंकि ये लग रहा है कि थोड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा है. ओके, वेरी नाइस. तो देखो बेटा क्या है यहाँ. See here, this seems to be as contradictory.
What is the reason? Why the things happen otherwise? Why this stops? Actually, there's an external force. That external force here is that external force that acts on this body is here is फ्रिक्शनल फोर्स. वो भी डिस्कस करेंगे ना बेटा. देखो आगे डिस्कस यही करना है, ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा डिस्कस करनी है. देखो बेटा क्या है एक्चुअली, अगर यहाँ ये हमेशा चलेगी, ये बॉडी हमेशा चलेगी विद v इज इक्वल टू कांस्टेंट और इसकी एक्सेलरेशन होगी 0, हमेशा चलेगी कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब का फॉर्मूला. लेकिन एक्चुअली अगर यहाँ क्या है, यहाँ F एक्सटर्नल लग रहा है, F एक्सटर्नल इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो इसको अपोज करता है. यहाँ F एक्सटर्नल लग रहा है अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट स्टॉपेज, और वही इसको स्टॉपेज का स्टॉप करता है फाइनली. अगर हम इस F एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स को यहाँ खत्म कर देंगे फ्रिक्शनल फोर्स को, स्मूथ सरफेस लाएंगे, एक ऐसी सरफेस लाएंगे जो फ्रिक्शन हो, दैट इज इम्पॉसिबल. लेकिन आइडियली थ्योरेटिकली अगर हम कहेंगे तो ये बॉडी हमेशा चलेगी, एक कभी नहीं रुकेगी. अगर एयर रेजिस्टेंस खत्म करेंगे, अगर फ्रिक्शनल फोर्स खत्म करेंगे तो ये बॉडी हमेशा चलेगी. But Aristotle Sahab was not knowing about the frictional forces. That is why उसने कहा कि a constant force is required to move a body continuously. That is wrong. That was proved to be as wrong by Galileo Galilei when he performed experiments on this. He performed a single plane experiment and he performed a double plane experiment. बेटा थोड़ा वो भी इसके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे आपको. लेकिन फिलहाल यहाँ करेंगे तो न्यूटन साहब का लॉ तो हमने यहाँ डिफाइन किया. अब यहाँ डिस्कस है कि how न्यूटन साहब का पहला लॉ डिफाइन करता है फोर्स को and how it defines inertia. ऐसी बेटा क्वेश्चन अब क्वेश्चन ये है how Newton's first law gives definition of force, okay. How it defines force, वो भी सेम बात. How it defines force, ये कैसी फोर्स को डिफाइन करता है? देखो बेटा इसका आंसर है ऐसी. देखो क्या बेटा, न्यूटन साहब का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर किसी बॉडी का मास है ना, मास, if it is at rest that means its v is 0. its v is rest का मतलब क्या है कि इसकी v है ना, v velocity 0 है. यह है बेटा ग्राउंड. देखो बेटा क्या है, this will according to Newton's first law the body will remain continuously in its state of rest unless some external force is applied on it. So it is the external force in the form of push or pull which changes the state. Hence the Newton's first law gives definition of force. इसलिए क्या मैंने कहा, अरे ये न्यूटन साहब कह रहा है कि ये बॉडी हमेशा रहेगी रेस्ट में, ये कभी खुद चेंज नहीं करेगी अपना स्टेट, कभी ये मोशन में नहीं आएगी, बिकॉज इट विल कंटिन्यू रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस, कब तक, जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए. वंस हम जैसे ही कि बेटा हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स, एंड दैट फोर्स विल चेंज इट स्टेट, दैट विल ट्राई टू चेंज इट स्टेट और विल चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट इनटू स्टेट ऑफ मोशन. दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट इज इक्वल टू स्टेट ऑफ मोशन. कौन फोर्स? तो what is the force? Force is a push or pull. Force is that agency in the form of pull which only can change the state of a body. That is, it can change the state of rest into state of motion, or state of motion can be changed into state of rest. Okay, लिख लो, आसान लिख लो बेटा कैसे, यही बात समझ में, हाँ लिख लो. देखो बेटा क्या ऐसे आंसर लिख लो बेटा, मैं आपको लिखाऊंगा. देखो बेटा लिख लो आसान तरीके से. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सिर्फ थ्योरी है आज. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ए बॉडी कंटिन्यूज in its state of rest, or state of uniform motion, unless some force is applied on it, unless some external force is applied on it. So it is the external force. तो बेटा ये क्या है? So it is the external force.
So it is the external force in the form of push or pull, in the form of push or pull, in the form of push or pull, which can alone change the state of a body. In the form of push or pull, which alone can change the state of body, which alone can change the state of a body, which alone can change the state of a body. Thus Newton's first law defines force. Thus Newton's first law gives definition of force, or we can see thus Newton's first law defines force. Okay, wait, beta, I was क्या Newton's first law कह रहा है कि a body can reach the state of rest or state of uniform motion in a straight line unless some external force is applied on it. So it is the external force in the form of push or pull which alone can change the state of body into state of body of rest into state of body in motion or motion into rest. So thus Newton's first law gives definition of force. How? Because force alone can change the state of a body, that is state of rest into state of uniform motion, or state of uniform motion into state of non-uniform motion, or state of non-uniform motion into rest. Okay, very nice. In that sense, we can say that Newton's first law defines force. Now, next thing here is how Newton's first law. Now, second thing is how Newton's first law defines inertia, and that is why Newton's first law is also known as law of inertia. वो भी define करना है. Okay. ये लिख लो. एक कभी एक पॉइंट आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए. एक और पॉइंट बेटे यहाँ, एक और पॉइंट, हाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दूसरा पॉइंट ले लो. हाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन्स, फर्स्ट लॉ डिफाइन्स बेटा, क्या डिफाइन करता है? डिफाइन्स इनर्शिया. कैसे इनर्शिया को डिफाइन करता है बेटा? ओके, वेरी नाइस. लिख लो आंसर, लिख लो बेटा. Okay, again यही लिखो बेटा. According to Newton's first law, a body continues in its state of rest or state of uniform motion unless some external force is applied on it. बेटा यही लिखो. क्या लिखो बेटा यहाँ? According to वही सेम बात. According to Newton's first law, क्या कह रहा है Newton's first law? बार तो लिखना पड़ता है. According to Newton's first law, a body continues in its state of rest, or state of uniform motion, in a straight line, unless some force, external force is applied on it. External force is applied on it. तो बेटा देखो क्या है, a body cannot change its state of rest or state of uniform motion unless some external force is applied on it. This inability of a body to change its state, cannot change its state by itself, is known as inertia of the body. Hence, in that sense, we can say that it defines inertia. Hence, a body cannot change its. A body cannot change its state by itself. Cannot change its state by itself. खुद ये नहीं करेगी, इसको एक्सटर्नल कोई करेगा, खुद नहीं होगी अपने सिस्टम में, कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी इसकी इनकैपेबिलिटी है. Hence, a body cannot change its state by itself. This inability of a body to change its, जो इसकी नाकाबिलियत है, ना एहलियत है, ना कैपेबिलिटी है कि अपने आप को चेंज करे अपना स्टेट, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इनर्शिया. Hence, a body cannot change its state by itself. This inability of a body is known as inertia. This inability of a body to change its state by itself, is known as inertia. Is known as inertia. Hence, Newton's first law defines inertia. आई बात समझ में? Hence, Newton's first law, क्योंकि
Newton's first law states that a body continues to state of rest or state by uniform unless some external force is applied in. So a body cannot change its state by itself. This inability of a body to change its state by us, that the body cannot, inability means that it cannot change its state by itself, is known as inertia. Hence, in that sense, we can say that Newton's first law defines inertia. Okay, very nice. Okay. Hence, Newton's first law defines inertia. Okay, very nice. Okay. कुछ भी नहीं है बेटा. आखिरी बात क्या है? It defines mechanical. It gives concept of. तीसरी थी Newton's first law gives concept of. Newton's first law gives concept of. क्या concept देता है? It gives concept of mechanical equilibrium. Concept of क्या देता है? Mechanical equilibrium. कैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? देखो बेटा, मैकेनिकल, व्हेन अ बॉडी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वन मस्ट नो व्हाट इज ए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, देन हाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स कांसेप्ट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. देखो बेटा, न्यूटन साहब का तीसरा पॉइंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ रिलेटेड क्या है बेटा? यहां लिखा मैंने, न्यूटन साहब का लॉ फर्स्ट लॉ किस तरह देता है हमको कांसेप्ट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. देखो बेटा क्या है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, देखो बेटा, if a body is at rest, it means B is 0, then net sum of forces acting on the body is 0. When net sum of, when ये आगे भी डिस्कस करेंगे बेटा, थोड़ा लिखेंगे यहाँ, आगे डिस्कस करेंगे. When net resultant of all the forces, when net resultant forces on a body is 0, on a body is 0, then the body is in equilibrium. Then the body is in equilibrium. बेटा, एक बॉडी कब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होती है? When total sum of forces acting on it is 0. When the resultant of all the forces on it is 0, then at that time we can say that the body is at rest. और body ये भी हो सकता है, ये भी इक्विलिब्रियम है. This is equilibrium of rest. This is equilibrium of rest. लेकिन अगर बॉडी चल रही है with uniform motion, V is constant and A is 0, इसको भी कहते हैं इक्विलिब्रियम. लेकिन इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन. इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट. इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट. लेकिन बेटा इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन. क्या होता है इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन? Equilibrium of motion means that when a body is at rest, then total sum of forces acting on it is 0. That is, no force is required to keep a body at rest, and no force is required to keep a body in uniform motion in a straight line. And that gives the concept of here mechanical equilibrium, and that is known as mechanical equilibrium. What is mechanical equilibrium? When number of forces acting on a body is 0. If the body is at rest, then the body will be at rest. But if the body is in uniform motion, it will be in uniform motion. But again, this comes from the Newton's first law of motion. Because according to Newton's first law of motion, a body continues in its state of rest or state of uniform motion unless some external force is 0. So when net force is acting on, when external force acting on it is 0, it is in equilibrium. It is in equilibrium. In that sense, it gives the concept of equilibrium. Okay, very nice. A body may be at rest when number of forces acting on it is 0, then at that time we can see it is equilibrium of rest. But equilibrium of motion is that when a body moves continuously in a straight line, then total sum of forces acting on it is 0. And that is again we get from Newton's first law of motion. And with this I have concluded my topic, and shall I will meet you next. Okay, wish me all the best.